Good morning all of you. So I will give you the link for the Google Meet, but unfortunately our network is very low, so that's why it is not connected. So I am recording the video, and after that I will upload the YouTube my channel. You can see online education 4.0. Okay, so we discuss about today another topic. It is from the same chapter. It is quadratic equations. All of you know that quadratic equation is going on. So today we discuss another method to solve the equation. That means we have find out the roots of the equations. Earlier we have to find out the roots of the equations, which is applying our factorizations method, very common method, factorizations method. Now we see another method. Another method we have to apply and find out the roots of the equation. Okay, so what is this method? The name of this method is complete the square. That is complete squaring method. So what is complete squaring method and how to apply this method and to solve the quadratic equations and find out the roots of that equations. Okay, so let's see. This is suppose solutions of a quadratic equations by completing the square. So find the roots of the equation. Okay, find the roots of the equation. Equation is this: 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. Okay, by the method of completing the square. This complete the squaring method. We have to apply squaring method and find out the roots of that equation. So what is the first step on this method? You can see first this equation is given 5x square minus 6x minus 2 equal to 0, and we know that whatever equations given to us, firstly we have to check these equations should be follow the standard form of quadratic equations or not. So you can see is a standard form of quadratic equations because first term is a x square term. So that means this is quadratic equations, standard form of quadratic equations. So what is the first step on this method? The first step is you can observe, that means you can see what is the coefficient of x square term. What is the coefficient of x square term? What is the coefficient of x square term? So you can see the coefficient of x square term is 5. Okay, the coefficient of x square term is 5. This is the coefficient of x square. So now the first step on this method is find out the coefficient of x square term, then you can divide the each and every term that coefficient term. That means जितना भी इक्वेशन में आपका टर्म है सभी को उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. That is the first step on this method. You can see here 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. 5 is the coefficient of x square. We can divide each and every term by this coefficient. That means 5. 5x square by 5, then minus 6x by 5, then again minus 2 by 5 equal to 0. Okay. Next you can see 5 is cancelled, denominator and numerator are same, so that's why it is cancelled. So remaining term is only x square. Okay. Minus 6 by 5x. Again minus 2 by 5 equal to 0 because no cancellation is there. So same term will be put here. So 6 by 5x minus 2 by 5 equal to 0. Next what we do? Next we remove, that means we move this constant term left hand side to right hand side. So you can see x square minus 6 by 5x and minus 2 by 5 you have to move it left to right. That means minus 2 by 5 when you move it the left to right, then it will be positive, then it will be plus 2 by 5. Okay. So next see, this is our second step. Now third step is what? You can see x square is one of the term and minus 6 by 5x is one of the term. तो ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखने से हम लोग को क्या मालूम चलता है कि दोनों टर्म में या तो a minus b whole square formula या तो a plus b whole square formula. That is either a minus b whole square or a plus b whole square formula will be applied. So see x square मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Suppose a plus b whole square is what? We know the formula a square plus twice ab plus b square, isn't it?
नेक्स्ट a minus b whole square formula is what? a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square, isn't it? Okay, so see now this, observe this two term x square and minus 6 by 5x, दोनों टर्म के बीच में क्या साइन आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। तो यानी कि या तो माइनस साइन आने से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है? या तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये डिपेंड किस में करेगा? दोनों टर्म के बीच में क्या साइन है उसमें डिपेंड होता है। तो दोनों टर्म के बीच में यहाँ पे क्या साइन है? माइनस साइन है। दैट मीन्स कि हम लोग को क्लियर हो गया कि हमको a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेना है। इट इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ दिस, वन ऑफ द स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन दिस मेथड। ओके, सो हम लोग को a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लेना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, इजंट इट? तो अभी देखो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाला टर्म है और ये माइनस 2ab है ना? तो इन दोनों टर्म जो है यहाँ पे है, इमेजिन करो कि ये a है, ये 2ab है, ठीक है? तो ये a स्क्वायर वाला टर्म हो गया, दिस इज a स्क्वायर टर्म एंड दिस इज 2ab टर्म। ओके, तो अभी आप माइंड में आएगा कि 2ab, तो आप बोल रहे थे 2ab है क्या? कैसे होगा 2ab? तो b वाला तो है नहीं, तो ये वाला क्या b है? ये b नहीं है, ये 2ab वाला टर्म है। कैसे मैं बता रहा हूँ? तो ये हम लोग को क्लियरिफाई हो गया कि हमको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वही हम लोग को लिखना है। क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab। तो फर्स्ट a स्क्वायर आ गया यहाँ पे, a स्क्वायर, isn't it? a स्क्वायर x होल स्क्वायर, दैट मींस इमेजिन इट इज a माइनस 2 इंटू a, जो फॉर्मूला में है हम लोग वैसे ही लिखेंगे, 2 इंटू a मतलब क्या है? x एंड b। अभी b क्या आने वाला है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि b है यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे 6/10 आ गया, तो आपको दिखने से मालूम चला यहाँ पे कहीं पे भी 6/10 नहीं है। तो कैसे आया 6/10? तो सी ये जो पहला वाला जिसको हम लोग ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसमें ये जो मैंने बताया था पहले कि ये 2ab वाला टर्म है, तो इसमें देखिए 6/5x है ना? तो यानी कि 2ab करने के बाद, यानी कि 2 के साथ a मल्टीप्लाई b, इन तीनों का हो जाने के बाद, तीनों को करने से हम लोग को आंसर मुझे 6/5x ही मिलना है। तो x तो a वाला टर्म है ना? तो 5 वाला टर्म, b वाला टर्म क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 6/5 होगा? तो अब देखो 2 के साथ अगर हम लोग 6/10 लिखते हैं तो 2 10 कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाता है? 6/5। तो यानी कि हमको b वाला टर्म जो है 6/10 पकड़ना है। लेट अस टेक 6/10 इज ए टर्म ऑफ b, so you can write here 6/10। अगर आपने b वाला टर्म 6/10 लिखे हैं तो साथ जितना भी b यूज करेंगे उसमें 6/10 ही लिखना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 6/10 होल स्क्वायर। अभी जी ये वाला टर्म हम लोगों ने एडिशन लिखा है, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग लिखा है, ऐड किया है, एडिशनल टर्म है। तो लेफ्ट साइड में जो b वाला टर्म होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही b वाला टर्म होगा। लेकिन याद रखना है कि लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट साइड में आपने प्लस b, जो भी टर्म आपने b का लिखा है उसका साइन अगर प्लस है, तो राइट साइड में वो वाला टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर यस देखिए, प्लस 6/10 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 6/10 होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने 6/10 होल स्क्वायर लिखा है, प्लस 6/10 होल स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर इसको अगर फिर से इधर से इधर आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर b और b कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इसको मैच ही करके हम लोग को लिखना है, ठीक है? तो नाउ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 6/10 होल स्क्वायर, 6/10 प्लस 6/10 होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 प्लस 6/10 होल स्क्वायर। यानी कि 6/10 जो है b टर्म है, दोनों तरफ लिखना है, लेफ्ट साइड में भी लिखना है, राइट साइड में भी लिखना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यू कैन सी सपोज मैंने a प्लस b, सपोज a इक्वल टू c है, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस 1 लिखूं और c प्लस 1 लिखूं, तो अल्टीमेटली तो इसका मतलब जो है यही होगा, है ना? क्योंकि ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू c हो जाएगा, है ना? ठीक उसी तरह। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2/5 प्लस b स्क्वायर, ठीक है? तो अभी ये जो है, दिस वन इज आवर फॉर्मूला, विच इज द फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर का है. So a means x and b means now our 6/10. So x minus 6/10 whole square equal to 2/5 plus 6 square करने से 36, 10 square करने से 100. Okay? So x minus 6/10 whole square equal to यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 और 100 का 100. So it is 520 जा 100, 22 जा 40, 40 plus 36 by 100. That means x minus 6/10 whole square equal to 76 by 100. Okay. Now next step, remove this square. तो हम लोग को पता है कि we know that any term of square in right hand side to remove that, then automatically will be left hand side will be or right hand side will be, it is just root of square है ना, root square. So you can see x minus 6/10 मैंने स्क्वायर को हटा दिया, तो स्क्वायर को हटाने से यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस सिंबल एंड रूट ओवर 76 by 100. Clear? So x minus 6/10 equal to plus minus root over 76. 76 का स्क्वायर रूट नहीं है. We do not know the square root of the 76. Do not know means 76 का स्क्वायर रूट है ही नहीं. जैसे कि 25. What is the square root of 25? That means it is a 5. And what is the square root of 9? It is 3. So like that we know, but 76 is not a square root number. So 76 का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालना है ऐसे करके. तो यहाँ पे 2 जो है 76 का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90. दैट मींस 2 to the 4 and 4 19 the 76, isn't it? So ये दो जो 2 है पेयर हो गया, तो एक बाहर चला जाएगा और रूट ओवर 19 जो है 19 तो रूट ओवर का अंदर ही बैठेगा. सो दैट मींस व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 76? द स्क्वायर रूट ऑफ 76 is 2 root over 19. And 100 square root, we know that 100 square root is 10, so it is 10. Okay, now square is removed and some square root is also removed. So now what to do? We do x minus 6/10 equal to plus minus 2 root over 19 by 10. Then we can move it this minus 6/10 term left to right side. Okay. So my x minus 6/10 equal to plus minus root over 19. Root over 19 by 5 क्यों आया, 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 हो गया है, तो 2 root over 19 by 5. So now see either x minus 6/10 equal to root 19 by 5. So minus 6/10 को इस तरफ लेके जाना है. You can remove this left to right. X equal to 6/10 plus root over 19 by 5. Okay, 6/10 plus root over 19 by 5. और x minus 6/10 equal to root over 19 by 5 and 6/10 minus root over 19 by 5. That means plus minus आता है, एक प्लस में वैल्यू आएगा और एक माइनस में वैल्यू आएगा, है ना. So either this or this. So now see x equal to 6 plus 2 root over 19 by 10. That means 5 और 10 का एलसीएम लेने से 10 आ जाएगा. तो 6 plus 5 to the 10 and 2 root over 19 by 10 और 6 minus 2 19 by 10. ये तो सिंपल है जो हम लोग पहले से करके आते हैं. Main things what is that? Main things what is the step of the completing square method? The first step of the completing square method is what is the coefficient of x square term you can identify first. What is the coefficient of x square term? And that term you can divide each and every term. Okay, each and every term of the equation is also divided by coefficient of x square term. Okay, let's see. This is the first step. This is the first step. Okay, this is the first step. Second step is, after that, second step is what is the which formula we have to apply. That means a minus b whole square or a plus b whole square. These two formula, either a plus b whole square or a minus b whole square formula you have to apply on that method. But which one you can apply, it will be dependent on the sign. It will be dependent on the sign between these two terms. What is the two term? After divided two term will be given x square minus 6 by 5x. तो इन दोनों का बीच में क्या साइन है, ये डिपेंड करेगा कि आप a plus b whole square फॉर्मूला यूज करेंगे या a minus b whole square फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना. तो फॉर्मूला अगर एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, फिर जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे a minus b whole square फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a minus b whole square फॉर्मूला में क्या था, a square minus twice ab plus b square. तो उसमें उसको स्ट्रक्चर में हम लोग को लाना है, a square minus 2ab plus b square स्ट्रक्चर में हम लोग को लाना है इक्वेशन को.
तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या होगा वो आपको डिपेंड करेगा, ये जो टर्म है 2ab वाला जो टर्म है इसमें डिपेंड करेगा, है ना। जैसे 6/5x था तो 2 इंटू एक्स, ये तो कॉमन है, आने ही वाला है, 2 तो कॉमन ही है, x जो है आप पहले वाला टर्म से ले ही लेंगे x, है ना। b क्या होगा, अभी 2 के साथ x मल्टीप्लाई होने के बाद 2x तो आ ही रहा है, अभी इसमें 6/5 चाहिए, तो 6/5 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, 2x तो ये कॉमन आ ही रहा है, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 6/5 आ जाए सब पूरा मल्टीप्लाई करने से, तो ये जो है 6/10 होने से तो 2 5 से 10 हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा 6x/5 आ जाएगा। तो यानी कि इसका ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप लोग ऑलरेडी करके आए हैं, स्क्वायर रूट को हटाना है, लास्ट में लास्ट स्टेप इज टू रिमूव दिस स्क्वायर, एंड व्हेन यू रिमूव दिस स्क्वायर देन राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली पुट इन द साइन प्लस माइनस एंड रूट ओवर स्क्वायर, रूट ओवर सिंबल, है ना, स्क्वायर रूट ओवर सिंबल, then these are the common method we have to solve this problem. So this is the main step. First you can identify if it is quadratic equations or not. Second step you have to verify the coefficient of x square term. Third step is you have to divide this term, each and every term of the equation, that means each and every term of the equation is divided by the coefficient of x square. Next you have to identify which formula, that means what formula you have to apply, a minus b whole square or a plus b whole square. It will be dependent on the sign between these two terms. Okay, after that you have to fill up the structure of the either a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, or a minus b whole square, that means a square minus 2ab plus b square. इस स्ट्रक्चर में आपको लाना है, लाने के बाद ही आप लोग लिख सकते हैं कि ये a minus b whole square फॉर्मूला में आया है। फिर स्क्वायर को हटाना है, लास्ट स्टेप, स्क्वायर में हटा के रूट आना है, तो रूट में अगर रूट स्क्वायर रूट नंबर होगा तो रूट हट जाएगा, 25 और जैसे 76 है स्क्वायर रूट, इट इज नॉट ए स्क्वायर रूट नंबर, दैट्स व्हाई रूट और भी 76 का एलसीएम लेना है, तो 2 रूट ओवर 19 एंड 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10, है ना। उसके बाद तो जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड में लास्ट पार्ट किया था, आइदर सॉल्यूशंस हम लोग निकालते थे, दो सॉल्यूशंस हम लोग को निकालता था, आइदर दिस और दिस, तो ऐसे ही आप लोग को करना है, ठीक है। सो दिस इज द completing square method, how to apply this method, and we have to solve this equation, and we have to find out the roots of the equations. Okay, so I hope all of you understood. Any difficulties, any queries, then ask me. Okay.